हेलो। वॉइस चेक करता हूँ मैं। वॉइस कैसी आ रही है? वॉइस आ रही है एकदम बढ़िया सी, एकदम क्रिस्प। वॉइस आ रही है एकदम बढ़िया सी, एकदम क्रिस्प। ओके। एंड ऑडियो प्रॉपर्टीज। मैं इसको 0 कर दूँ। 0 कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ। कैसी आवाज़ आ रही है? अब कैसी आवाज़ आ रही है? बैकग्राउंड नॉइस क्यों आ रही थी? मैं मॉनिटरिंग से कर सकता ना। व्हाट द फक? हंड्रेड कर देते हैं इसको और इसको मॉनिटर एंड आउटपुट कर देते हैं। हेलो। बहुत ही ज़्यादा बेकार। 75 कर देते हैं। एंड आप कैसी आवाज़ आ रही है? परफेक्ट आवाज़ है, आई गेस। तो जो भी कर लिया, ठीक है। हेलो। कौन सा वाला माइक चल रहा है मेरा एक्चुअली? माइक्रोफोन भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि चार आ रही है, नहीं आ रही। हम लाइव में तो नहीं शामिल करने वाला मैं। गुड है। Okay, so let's start. ऑडियो कैप्चर बंद कर देता हूँ। परफेक्ट आ रही है आवाज़, तो मैं क्यों सुनूं अपनी आवाज़? अब आ रही है परफेक्ट। परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट। ओके। बंद कर देता हूँ, काम करता हूँ। हाँ, इनको मैंने बंद कर दिया।
अब लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है क्या स्क्रीन पे? मैं ट्राई करता हूँ अपनी स्क्रीन देखने का। एंड यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ क्या भाई क्या। हम Maddie is live. Maddie is live now. Absolute cinema guys. बहुत ही गंदी वॉइस क्वालिटी है तो। ये तो बहुत ही गंदी वॉइस क्वालिटी आ रही है स्क्रीन पर। मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ? इम्प्रूव कैसे होगी ये? तो इनेबल करना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? ओके कूल। फाइनल तो मैं नहीं करने वाला। ओके सो हमारे पास बेस मटेरियल हमने उठाया है साइंस एंड फन के चैनल से। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। अपनी आवाज बंद कर देता हूँ ना। आवाज बंद। ओके साइंस एंड फन के चैनल से मैंने अपना मटेरियल उठाया है। और मैंने ये वीडियो देखी थी साइंस एंड फन के चैनल पे। 80-20। सो मैंने सोचा क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, लेट्स ट्राई। एंड मुझे स्पीड रन करना ही था माइनक्राफ्ट में, तो मैं बहुत बार स्पीड रन करता हूँ। एंड यू मस्ट हैव वॉच्ड मी ऑन द वर्ल्ड साइड चैनल। मैं वहाँ पे माइनक्राफ्ट स्ट्रीम में स्पीड रन करता ही रहता हूँ। बट मैंने कहा बार आपकी बार सी फाउंडेशन में भी, सी फाउंडेशन में भी हमें स्ट्रीम करना चाहिए स्पीड रन। तो आप इस चैनल के लिंक से यहाँ से लाइक ये है ड्राइव, मैंने ये यही से उठाया है ये, ऐसे उठा के। और तो मेरे को ये यहाँ पे ये मिला है बिजनेस लॉ के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले हैं लाइक आईआरएफ से मिले टाइप ऑफ लॉज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, काइंड्स ऑफ ऑफर, डिफरेंस बिटवीन ऑफर इनविटेशन टू ऑफर। मतलब बहुत सारे यहाँ पे बहुत ही सारे टॉपिक्स हैं। लगभग कितने होंगे टॉपिक्स ये आई गेस, अगर एक बीच में एक पेज में 20 मानूँ तो 60 के अराउंड टॉपिक्स होंगे। 50-60 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। एंड इट इज़ गारंटिंग यू लाइक हाफ ऑफ द 55 या 60 नंबर गारंटी है अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए। एंड आई थिंक मैं ये कवर करने जा रहा हूँ आज। आज की डेट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं कम से कम नहीं तो कम से कम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईआरएफ के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। सो आई थिंक आई स्टार्ट हियर। देयर इज इन चैट। ऑल्सो चैट इफ यू हैव लाइक आपके पास कोई सजेशन या फिर इम्प्रूवमेंट्स हैं, यू कैन सजेस्ट मी एंड help the other peers who are joining the stream. I'm gonna watch the chats too, क्योंकि मज़ा तो चैट पढ़ने में आता है।
इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नोट्स। अच्छा पता है तो क्या सोच कैसे नोट्स मिलते हैं हमें? लेट्स सी। कई बार शॉर्ट्स पे भी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं। सीधी करके भी नोट्स बढ़िया रहता है वैसे मेरे हिसाब से। सीधी करके भी नोट्स बढ़िया रहता है, स्टार शीट्स ना बहुत बढ़िया रहती है वैसे। मैंने उससे पढ़ा था काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी मुझे। बट मेरे को अभी साइन करने का ऑप्शन नहीं है तो मैं इससे नहीं पढ़ूंगा। मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स को चैट जीपीटी से भी पढ़ सकता हूँ वैसे। और भी खोल सकता हूँ मैं। आईसीएस बिजनेस लॉ मॉड्यूल मॉड्यूल। सो आईआरएफ का मॉड्यूल खोल देते हैं हम। एंड हम स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। बिजनेस लॉ ये okay। सबसे पहले ये वाला टॉपिक ये वाला पेज खोलना है। इसमें से मॉड्यूल पेज नंबर निकालना 1.5 है जो कि। सो हम 1.5 पेज खोलेंगे। ये पढ़ना है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ। ओके। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये हो गया फुल स्क्रीन। टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। Law is proposed, it is called a bill. After the discussion and debate, the law is passed in Lok Sabha. Thereafter, it is to be passed in Rajya Sabha and it has obtained the assent of the Prime Minister of India. Finally, the law will be notified to the government in the publication called the Official Gazette of India. The law will become applicable from the day mentioned in the date. Effective date. Once it is notified and effective, it is the act of parliament. ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है? बेसिकली कोई भी लॉ जब आता है उसके लिए सबसे पहले एक बिल राज्यसभा में जाता है। नहीं, लोकसभा में जाता है। ओके। कोई भी बिल लोकसभा में जाता है, उसके बाद वो बिल जो है राज्यसभा में जाता है। इट हैज़ टू ऑब्टेन द मेजॉरिटी। यहाँ पे हम इसको मेजॉरिटी ऑब्टेन करनी होती है। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी इन द लोकसभा, इट हैज़ टू ऑब्टेन द मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। And when it has the assent of the both, then it has to assent the prime minister, president of India, जो कि सिग्नेचर करती है अपने एंड वो सेंड कर देती है इस लॉ को रिगार्डिंग। फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया होता है
उसमें लॉ नोटिफाइड होता है, जिस दिन वो नोटिफाई होता है उस दिन से वो लॉ इफेक्टिव हो जाता है, एंड उस लॉ को हम पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इट्स डन। सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या लिखूंगा मैं? आई वांट टू राइट प्रोसेस ऑफ मेकिंग। फर्स्ट, सबसे पहला लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में कितना ऑप्टेन करना है इसमें? स्पेसिफिकेशन है क्या? पास अ बिल इन लोकसभा। मोर देन 50% ऑफ द वोट्स, 50% से ग्रेटर। फिर राज्यसभा जाएगा। यहाँ पे हमें शायद 2/3 ऑफ द सीट चाहिए। यप, यप, यू राइट। 2/3 सीटिंग चाहिए। 50% एंड 2/3। which one is which house? देन प्रेसिडेंट का असेंट दिया जाएगा। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिल जाएगा, देन वी नीड पब्लिश इट इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा। उस दिन से ये पार्लियामेंट का एक्ट कहा जाएगा, पार्लियामेंट एक्ट। एंड डन, वी आर डन। दिस इज इट, इतना ही पढ़ना था। टाइप अबे टाइप्स ऑफ लॉज। अब टाइप्स ऑफ लॉ की बात करेंगे इन इंडियन लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम, टाइप्स ऑफ लॉ, इंडियन लीगल सिस्टम। ओके, सो टाइप्स ऑफ लॉ की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ इंडियन लीगल सिस्टम में चार टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट क्रिमिनल लॉ, सेकंड सिविल लॉ, थर्ड कॉमन लॉ, एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ विच इज कंसर्न्ड विद लॉ pertaining to violation of the law, rule of law or public wrongs, punishment of the same. Criminal law is governed under the Indian Penal Code or Bharatiya Nyaya Sanhita, and criminal procedure is CRPC. Indian Penal Code 1860 defines the crime, its nature and punishments, whereas the criminal procedures defines the exhaustive murder, civil disputes. Matter which is uh, organization, civil enforces the violation of rights and legal obligation. Okay, and common law, a judicial precedent, a case law is common law, delivered by the binding.
The doctrine of stare decisis is the principle supporting common law. It is a Latin phrase that means to stand that is which is decided. The doctrine of stare decisis reinforces the obligation of court to follow the same principle of judgment established by the prior decisions while ruling a case where the facts are similar on all four legs. ओके सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन लॉ की कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है कॉमन लॉ मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास की गई पास्ट में जो भी जजमेंट्स होंगे और सेम केसेस अगर आते हैं सेम प्रेसिडेंट्स आते हैं प्रेसिडेंट्स सेम अगर केसेस आते हैं तो जो नेक्स्ट केसेस होंगे इफ दे आर इक्वल ऑन फॉर ऑल लेग्स मतलब जो अगर वो सिमिलर है अगर दो केस जो है वो सिमिलर है और पास्ट में एक केस में जजमेंट मिला हुआ है सो कॉमन लॉ ये कहता है कि जो नया केस है वो भी ऐसे ही डिसाइड होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेसिडेंट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी इसी तरीके से डील कर चुका है सो ये इसी तरीके से डील होगा इस टाइम भी एंड इसको कौन बताता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस यही इसको बताता है रीइंफोर्स करने में मदद करता है कि जो पहले डिसाइड हो चुका है लैटिन फ्रेज है ना टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगर मैं इसको लिखता हूँ एग्जाम में तो फुल मार्क्स लैटिन फ्रेज टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड लैटिन फ्रेज हो चुका है ओके एंड आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई डोंट थिंक आर्टिकल 141 याद रखने की जरूरत है यहाँ पे लिखना है जुडिशियल प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड equal on four legs. Doctrine of stare decisis. Stare decisis. Okay. कॉमन लॉ के ये 4 पॉइंट्स हैं ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे मैंने अगर नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डाल दूंगा क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के लिए क्या अच्छा वर्ड हो सकता है मेरे हिसाब से क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ राइट मी फाउंडेशन टाइप शिट criminal law deals with the offenses against the state society as a whole the wrong is a public wrong governed by the BNS 2023 replacing IPC 1860, BNSS Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, replacing CRPC 1973. Civil law deals with the dispute between individuals or organizations, private wrongs, governed by the CPC, Contract Act, tort law, etc. Private wrong, injury to the individual who files a plaintiff, aggrieved party, prosecutor. Okay. Public offense. State pub punishment, deterrence, protection of public order, balance of probabilities, damages, injury.
तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ मतलब होता है ऐसा लॉ जो क्रिमिनल एक्टिविटी को गाइड कर रहा हो, यानी कि जो सिविल जो एक्टिविटीज है, जो एक सोसाइटी में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज यानी कि बैड डूइंग्स है, मर्डर, रेप, थ्रेट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट एक्सेट्रा comes under this law. एंड द पब्लिक को जो पनिशमेंट और जो वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, इनकी रॉन्ग, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत करने की जो पनिशमेंट होती है वो ये लॉ देता है। एंड इट इज गवर्न अंडर द इंडियन पीनल कोड विच इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। आई डोंट नो कि एग्जाम में क्या आएगा, बट आई एम गोना राइट बीएनएस, इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दूंगा रिप्लेस बाय इंडियन पीनल कोड 1860। सिविल लॉ मतलब होता है कि सिविल मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी के क्रिमिनल डूइंग नहीं है, बट सिविल तरीके से है, विच हैज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। एंड अगर इसमें अगर कोई भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका प्रोसेस जो होता है वो क्रिमिनल लॉ के अंदर चला जाता है। एंड जितना पार्ट सिविल लॉ के अंदर रहता है वो सिविल कोड के अंदर सॉल्व होता है। सिविल लॉ प्राइमरीली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देन पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशमेंट दी जाती है, सिविल लॉ के अंदर पनिशमेंट नहीं दी जाती है। यहाँ पे हमें डिस्प्यूट का सॉल्यूशन दिया जाता है। एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908। This can be further classified into law of contract, family law, property law of torts. ओके, इसके अंदर आ सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो सिविल लॉ जो है वो हमारे बिजनेस लॉ का बेस है मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा अभी तक। एंड क्रिमिनल लॉ हमारे बेस नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल हमें कोई मतलब नहीं क्रिमिनल से। हमें मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, सोगा से, पार्टनरशिप एक्ट से, उसका रिजोल्यूशन से। हमें मतलब नहीं है कि कोई कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। आई थिंक वो जो फ्रॉड कोर्जन वाला पार्ट है वो आएगा क्रिमिनल के अंदर, बट या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, just natural deals with the fundamental certain principles of justice going beyond written law. Nemo jurex in casu sua. No one should be made a judge in his own cause. It's a rule against prejudice. Audi ultram patram literally means hear the other party and give them the fair chance of hearing. And reasoned decisions are rules of natural justice. A judgment can override or alter a common law, but it cannot override a statute. Okay, so principle of natural justice क्या कहता है? So principle of natural justice एक ही चीज कहता है, just natural। ये डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड लॉ। लॉ की भी एक लिमिटेशन है। लॉ की एक लिमिटेशन है कि जो उसके वर्ड्स हैं वो उसकी लिमिटेशन है। बट नेचुरल जस्टिस क्या करता है, ये बियॉन्ड जाता है जो कि रिटन है लॉ में, जो कि नेचुरल है, लॉजिकल है, अंडरस्टैंडेबल है, जो रीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ में ये नहीं लिखा होगा, अगर मान लो कि लॉ में ये नहीं लिखा है कि अम, कोई कोई भी चीज़ नहीं लिखी है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है, सो वो इस चीज़ के अंदर आएगी। जैसे कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। कोई भी अपने केस का जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ही बात सुनेगा और किसी और की पॉइंट नहीं सुनेगा। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कभी नहीं होने वाला तो पॉइंट से। ऑडी अल्टरन पार्ट हमेशा दूसरी अदर पार्टी को सुनने का और उसको उसको
ये हर्ड, उसको बोलने का मौका देना चाहिए और फेयर हियरिंग देनी चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। रीजन डिसीजंस इन ऑर्गेनाइज्ड कॉमन लॉ, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। ये कॉमन लॉ को कॉमन लॉ कॉमन लॉ को ओवरराइड कर सकता है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड द चेंज और द स्टैट्यूट। जो एक्ट है उसको ये चेंज नहीं कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। बट जो कॉमन लॉ है, जो कि हमने पढ़ा था अभी, दैट इज स्टेयर डिसाइसिस वाला, ये इसको ये ओवरराइड कर सकता है, बट ये कभी भी स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो लॉ के ऊपर है वो सबसे ऊपर है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लिखते हैं, उससे पहले क्रिमिनल लॉ लिखते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज, आईपीसी, बीएनएस 2023 के मर्डर, क्राइम एक्सेट्रा पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल है। क्रिमिनल और सिविल लॉ, सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ओवर पनिशमेंट। सिविल लॉ की बात करें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली डिस्प्यूट, ऑर्डर नॉन पेमेंट वगैरह एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्ट नेचुरल, ऑडी ऑल्टम पात्रम, आत्रम, नेमो जुडिस इन कॉसा सुआ, नेमो जुडिस इन causa sua. No one should be made a judge in his own cause. Goes beyond the written law. Principle of justice. Written law. Cannot override the statute. Cannot override statute. ओके, सो ये फाइनल फिनिश हो गया हमारा। ऑडियल फ्रॉम पार्टन। चलो, टाइप्स ऑफ लॉज हो चुका हमारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है जो होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में।
निर्मला सीतारमण के अंदर ये इंडस्ट्री आती है। सो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, विच इज ऑब्वियस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट की होगी। Primarily concerned with the administration with the Companies Act 2013, Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act 2008, and Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Responsible mainly for the regulation of Indian enterprises in the industrial and service sector. Okay, industrial enterprise in the industrial and service sector. Ministry is mostly run by civil servants, ICLS cadre. These officers are elected through civil services examination conducted by the UPSC. Highest post is the Director General of Corporate Affairs (DGCOA) is fixed at apex scale of ICLS. Okay, सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये हमारे गवर्न करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्न करती है इंडियन कंपनीज एक्ट को गवर्न करती है। 1956 हो गया या फिर 2013 हो गया, दोनों को गवर्न करती है। प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को भी गवर्न करती है यही। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को भी यही गवर्न करती है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन एंटरप्राइज, जिसे रिस्पॉन्सिबल है मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर के कंपनीज या फिर एंटरप्राइजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो मिनिस्ट्री के जो सर्वेंट्स होते हैं विच दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स एंड ICLS कैडरे, ये सिविल सर्वेंट्स के द्वारा रन की जाती है ICLS कैडरे। These officers are elected to UPSC obviously, and the highest post is DGCOA, यानी कि Director General of Corporate Affairs, which is the apex scale for the ICLS. ICLS का जो maximum potential है वो DGCO है, यानी कि अभी ये LTN है, लो टीयर, एंड जो उसका ट्रू चार्ज जो एकदम एडम लेवल का वो ग्लोब होगा वो होगा DGCOA बनकर। गृह मंत्रालय से हम नहीं पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा टॉपिक। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई इज अ कंप्लीट एपेक्स बॉडी, सबसे पावरफुल बॉडी, बहुत ही पावरफुल बॉडी है। सेंट्रल बैंक है, मतलब सारे बैंकों का बैंक। इट हैज द पावर टू कंट्रोल ऑल द मनी सप्लाई इन दिस इकोनॉमी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम तो पूरा आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। सो लाइक सारे बैंक हैं वो मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, और सारे बैंकों को ये बैंक कंट्रोल कर रहा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज अंडर द इन ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल, इशू, मेंटेन सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को रिलीज करना, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, सप्लाई करना, सारा काम आरबीआई का है। आरबीआई सप्लाई जो है वो मनी की पूरी सप्लाई को देखता है। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम को ये मैनेज करता है एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency in its two of its currency printing presses located in Nashik and Devas. RBI established the National Payment Corporation of India as one of its
specialized division to regulate the payment and settlement in India. आरबीआई ने एनपीसीआई को एस्टैब्लिश किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेशलाइज्ड डिविजन के अंदर पेमेंट सेटलमेंट के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाज स्पेशल डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिवाइस। बात करते हैं आरबीआई की। सबसे पहले ये तो सेंट्रल बैंक है, पूरे इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास है। इट आल्सो मैनेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका हाथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका हाथ है, कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम में इसका हाथ है। एनपीसीआई इसके ब्रांच के अंदर आती है, वन ऑफ स्पेसिफाइड डिविजन पेमेंट सेटलमेंट के लिए। अगर बात करें एनपीसीआई पेमेंट जैसे होती है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, उनको सेटलमेंट करने का काम भी आरबीआई का है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आप जानते ही हैं कि लाइक बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज आरबीआई। जबकि जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उसके पास ऑब्वियस ऑप्शन बचता है, दैट इज आरबीआई। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, ओके सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक हायरार्की है। Regulation of interpretation of acts and court, dispute resolution, promotion of fairness among the citizens of the land, hierarchy of the courts। ठीक है, तो देर इज hierarchy in the court। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है मिडिल पे हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड उसके बाद भी अगर कोई बड़ी सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का, ऑब्वियसली। Chief Justice of India is the highest authority appointed under the Article 126. Principal bench of the Supreme Court consists of 7 members, including the Chief Justice of India. Presently, the number has increased to 34, including the Chief Justice, due to the rise in the number of cases and workload. An individual can seek relief in the Supreme Court by filing a direct petition for Article 32. High Court High Court appeals in each state is the highest court. In 214 of the must there must be high court in each state. The high court has appealed. So इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ये याद रखना। फॉर one for each state and union territory, and one for each state and union territory। 25 है ना, one for each state and union territory, and one for each state and union territory। छह स्टेट जो है वो हाई कोर्ट को शेयर करते हैं सिंगल वाले का। An individual can seek remedies against violation of fundamental rights in the High Court by filing the right under the Article 2। Oldest High Court in the Calcutta में है, ओके ये हमें पता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के नीचे आता है। एंड जज द सिविल लॉ मैटर्स, contractual dispute and claim for damages। Court of Session deals with the criminal matter। कोर्ट ऑफ सेशंस होते हैं उसके क्रिमिनल मैटर से, ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल वो नहीं होते इसमें। एंड वो ऑलरेडी लाइक इसका मेन काम जो है वो सिविल लॉ को काम करना है। अंडर द पेक्यूनियरी jurisdiction a civil judge can try suits valuing not more than rupees 2 crores। 2 करोड़ की एक लिमिट बाउंड है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आती है।
ठीक है, jurisdiction means the power to control courts get territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on the local limits within the parties resides or the property under the dispute is situated. यानी कि कोर्ट की लिमिट कैसे डिसाइड होती है कि या तो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो जहाँ पे सिचुएटेड होगी वहाँ का कोड यूज होगा, या तो फिर लोकल लिमिट्स विद इन द पार्टी डिसाइड, जहाँ पे पार्टी डिसाइड करती होगी वहाँ पे होगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, जहाँ पे हायर पॉपुलेशन है वहाँ पे एक हायर कोर्ट का नंबर चाहिए रहेगा, तो इसलिए एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मजिस्ट्रेट हैज, यहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है and he has the power as chief judicial magistrate, and metropolitan magistrate has the power court of the magistrates as for the first class whatever. So हमारा chapter 1 finish हो चुका है and we are gonna take some break man. Finally we are gonna take some break and we're gonna start contract act next. Although मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड करी है अपनी and you guys can watch my video, तो मैं यही लगा देता हूँ ना, वीडियो ही लगा देता हूँ। Invitation भाई सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो? शो सम सपोर्ट मैन, लाइक ही नहीं ज्वाइन करी तुम लोगों ने। अब भाई जी को सुनते हैं, भाई जी को क्या बोलना है। लेट्स सी। लैग हो गया, फट गया मेरा वीडियो। रिएक्टिंग। समथिंग ऑफ वैल्यू।
Valid. Obligation.
Hey guys, so we are done here and we are closing this tab. And आज के लिए इतना ही। अभी अगर मैं थोड़ा देर में मन करेगा तो मैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम करूंगा। बाद में मन करेगा तो बाद में लाइव स्ट्रीम करूंगा। नहीं मन करेगा तो नहीं लाइव स्ट्रीम करूंगा। सोना मन करेगा तो सो जाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। अभी हम बाद में बात करते हैं। सो सो गुड बाय। स्टॉप स्ट्रीमिंग। ओके।